So students, welcome back again. I am your SST teacher Vandana Joshi and you are watching SST June. So students, nowadays we are studying geography third chapter, that is mineral and power resources. Already in our two videos we have studied about the minerals and their distribution and their conservation. So today in our third video we will see what are the power resources and what are these types in detail. Today we will study about the conventional resources and the non-conventional resources. So students, let's start the chapter's third part, that is power resources. So students, as we all know, energy or power play a vital role in the human life. Energy is required in every field of life. जैसे कि आप देखते होंगे जो एनर्जी है या फिर जो पावर रिसोर्सेज हैं वो हमें सभी जगह पे उनकी ज़रूरत पड़ती है. सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू रन machines in industry, in agriculture and for all domestic works. ओके सो व्हाट वी कैन से जो आपके पावर रिसोर्सेज हैं वो आपके हर जगह पे काम आते हैं, चाहे वो आपकी कोई इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का फील्ड हो या फिर कोई हाउस होल्डिंग डोमेस्टिक वर्क्स हो, उन सब में जो आपके पावर रिसोर्सेज हैं वो काम में आते हैं. ओके actually the power resources which we are using in our daily life, these all are fuels are widely used as a energy resource, which are mostly divided into two parts. These are conventional resources, that means the traditional, or in Hindi which we can say पारंपरिक, यानी कि जो पहले से चले आ रहे हैं. ओके सो दैट आर नोन एज द कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ पावर और एनर्जी. सेकंड इज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर द नॉन ट्रेडिशनल और विच वी कैन से जो कि नए हैं या फिर गैर पारंपरिक. ओके सो हियर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज? देयर आर टू. Okay, one is conventional resource and the second is non-conventional resource. So one by one today we will see what are the conventional resources and how many types are there, and what are the non-conventional resources and how many types are there of non-conventional resources. So let's start. So very first we will talk about the conventional resources of energy. So students, as you can see in the figure number 3.10, a flow chart is given which is showing what are the conventional resources. So let's see what are these. Okay, so here we can say the conventional resource are the traditional source of energy which have been used for a long time. Okay, जो यानी कि बहुत लंबे समय से चले हुए आ रहे हैं. Some of these are exhaustible, कुछ क्या है बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं. They are renewable and non-renewable. Okay, they are not just only non-renewable. These can be renewed. Only few parts. Let's see. Okay, so what we can say, they are renewable as well as non-renewable in nature. The firewood, coal, petroleum and natural gases are conventional source of energy, but these are exhaustible. यानी कि जो आपका कोल है, फायरवुड यानी कि लकड़ी, जो ईंधन की लकड़ी होती है, पेट्रोलियम एंड जो नेचुरल गैस है, ये सारे आपके क्या हैं? कन्वेंशनल सोर्स हैं, बट ये सारे क्या हैं? एग्जॉस्टेबल हैं. यानी कि एक बार अगर हम इन्हें यूज़ कर लेते हैं तो दोबारा से इनको हम यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि ये ख़त्म हो जाता है. ओके, बट इन द अदर हैंड द हाइडल पावर जो है is also conventional source, but it is non-exhaustible. हाइडल पावर भी कन्वेंशनल सोर्स है बट ये एग्जॉस्टेबल नहीं है. ओके, ये क्या है? नॉन एग्जॉस्टेबल, यानी कि हम इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर फाउंड फ्रॉम फॉसिल. कहाँ से बनते हैं कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस? कहाँ से बनते हैं? फॉसिल्स से बनते हैं. ओके, एंड हैंस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल. यानी कि जो आपके कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं?
fossil fuels बोलते हैं. So let's see how the fossil fuels formed. So students, why we are saying them the fossil fuel? We are calling them fossil fuel because their formation take place after decaying of plants and animals which got buried under the earth for millions of years and converted into fuel due to great heat and pressure. यानी कि हम इन्हें फॉसिल फ्यूल क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि ये कई लाखों करोड़ों साल पहले ज़मीन में जब बहुत सारे जो अर्थ में बहुत सारी प्रोसेसेस हुई तो उस समय पे जितने भी ट्रीज़, प्लांट्स, एनिमल्स जो भी थे वो धीरे धीरे, जैसे आप देखते हो वॉल्केनिक इरप्शन है या फिर अर्थक्वेक है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेशन जब हुए तो ये सब ज़मीन के अंदर दबते गए. और काफ़ी समय के बाद जब ये ज़मीन के अंदर दबे रहे लाखों सालों तक, तो ये किस में चेंज हो गए? फ्यूल में चेंज हो गए. क्योंकि ये फ्यूल हमें फॉसिल से मिला था, दैट्स वाई वी आर सेइंग इट as a fossil fuel, and they converted into fuel due to great heat and pressure. यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी अर्थ के अंदर और बहुत सारा प्रेशर जब इस फॉसिल्स को मिला तो ये किस में कन्वर्ट हो गए? फ्यूल में कन्वर्ट हो गए. सो नाउ लेट्स सी these conventional sources of energy one by one. First we will see the firewood. Firewood is widely used for cooking and heating. In India and other developing countries, more than 50% of energy used by villagers comes from firewood. But the collection of firewood is time consuming. यानी कि इसे कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. It also creates pollution as well as promotes greenhouse effects due to deforestation. क्योंकि फायरवुड से जो धुआं निकलता है वो बहुत सारे ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को पैदा करता है. ओके स्टूडेंट, सेकेंड टाइप ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज कोल. कोल इज अ सेडिमेंट्री रॉक. इट इज द मोस्ट एविडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल. It is formed millions of years ago by the decomposition of decayed plants. यानी कि जो कोल है वो आपके बहुत लाखों साल पहले जो प्लांट्स थे जब बरीड कंडीशन में चले गए तो उससे आपका कोल बना. ओके, इट इज़ सॉलिड एंड ब्लैक और ब्राउन इन कलर. देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ कोल बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ carbon contains. As already in the first video I told you, these types are anthracite, bituminous, lignite and peat. Coal is also referred as the buried sunshine. क्योंकि जो कोल है वो ज़मीन में गड़ा हुआ होता है, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं? बरीड सनशाइन. ओके, सो स्टूडेंट्स, चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड. Countries which large coal reservoir are USA, Russia, India, Australia and South Africa. Other important producers including Germany and France. In India, coal is mainly found in Raniganj. It is in West Bengal. Jharia, Dhanbad and Bokaro. These are in Jharkhand. And some part of Bihar, Madhya Pradesh and Maharashtra. Now let's see our third conventional source, that is petroleum. The word petroleum comes from the Greek word petra, which means rock, and Latin word oleum means oil. Is also known as rock oil or crude oil. यानी कि जो पेट्रोलियम है ये 2 वर्ड से निकला है, जिसमें से कि पेट्रा जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है रॉक, और जो ओलियम है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका की मीनिंग होता है ऑयल. तो इसीलिए हम पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल या फिर रॉक ऑयल भी बोलते हैं. इट इज़ वाइडली यूज्ड टू रन इंडस्ट्रियल मशीनरीज, फैक्ट्रीज, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, कार and other means of transport. Okay, students, petroleum is found beneath the earth in sedimentary rock, starts from where it can be extracted by bore technology.
means drilling technology. In its natural form, it is crude and has to be refined in refineries before uses. जो इसकी नेचुरल फॉर्म है वो क्रूड फॉर्म होती है और इसको रिफाइन किया जाता है रिफाइनरीज में एंड देन आफ्टर दैट वी आर गेटिंग it in oil form. Student, petroleum is most precious and very valuable, so we are knowing it as black gold, यानी कि काला सोना भी हम इसे कहते हैं. So Gulf regions in Middle East is the chief petroleum producing region. Saudi Arabia is the largest producer of petroleum in the world, followed by Iran, Kuwait, Iraq, and UAE. Other petroleum reservoirs are present in Mexico, Canada, and in North America. In India, Digboi in Assam and Bombay High in Mumbai and deltas of Krishna and Godavari rivers are leading area where petroleum is found. So resource number 4 is natural gas. So what is natural gas? Natural gas is found in with petroleum deposits and is released when crude oil is brought to the surface. यानी कि जो आपका क्रूड ऑयल होता है जब वो सरफेस पे लाया जाता है तो उसमें से जो गैस रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड नेचुरल गैस. इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट इट through the underground pipes. It is stored under high pressure as compressed natural gas means CNG. CNG, an eco-friendly automobile fuel, is gaining popularity in India. It is used in heating, cooking, power generation, motor vehicles and to produce nitrogen for fertilizers and carbon block for use in the tire industries. Some of the world's largest natural gas fields are found in Russia. The other major producers of natural gas are the US, Canada, Algeria, Iran, Norway, UK and Indonesia. In India, Jaisalmer, Krishna, Godavari Basin and some offshore areas in Mumbai have natural gas reserves. So student, here is one more resource which is conventional resource but it is renewable resource. It is known as hydropower. Power or electricity generated by the water is known as हाइडल पावर. यानी कि जब एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाटर के थ्रू जनरेट की जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं हाइडल पावर. ओके, सो हाउ द हाइडल पावर जनरेट्स. फास्ट फॉलिंग वाटर मूव्स टर्बाइन ब्लेड्स placed at the bottom of the dam. The moving blades then turn the generator to produce electricity. Hydropower generates the highest proportions of renewable energy. Though it is only 6.5% of the world's total commercial energy. 20% of the world's electricity comes from hydropower. यानी कि वर्ल्ड की जो 20% इलेक्ट्रिसिटी है वो कौन सी पावर से आती है हाइडल पावर से आती है. In some countries like Norway and the Democratic Republic of Congo, it accounts for 99% of the country's electricity. यानी कि आपके नॉर्वे और कॉन्गो जो हैं यहाँ पे 99% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइडल पावर के थ्रू ही बनती है. ओके, चाइना इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर. यानी कि जो चाइना है वो वर्ल्ड का सबसे टॉप का जो कंट्री है जहाँ पे हाइडल पावर यूज़ किया जाता है. ओके, यानी कि प्रोड्यूसर है. सॉरी. द मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स इन इंडिया आर भाखड़ा नांगल, नागार्जुन सागर, हीराकुंड, कोसी, रिहंद एंड चंबल.
Hydel power has two advantages of being a renewable energy resource that also does not create much pollution. यानी कि जो कि हाइडल पावर है उसके दो एडवांटेजेस भी हैं. एक तो ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है, यानी कि इसको बार बार रिन्यू किया जा सकता है, और दूसरा है इसको यूज़ करने में कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है. जैसा कि आमतौर पे फॉसिल फ्यूल्स से पॉल्यूशन मिलता है, बट हाइडल पावर एक ऐसा कन्वेंशनल रिसोर्स है जिसके थ्रू कोई पॉल्यूशन नहीं होता है. ओके, so students, now clear what is the conventional sources of energy? Now let's see our next topic, that is non-conventional sources of energy. So as the name is saying that non-conventional means non-traditional, यानी कि जो पहले से नहीं चले आ रहे हैं बल्कि हमने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको चेंज किया है. ओके, सो कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर डिप्लेइंग एट एन अलार्मिंग रेट, यानी कि जो कॉन्वेंशनल सोर्सेज हैं आपके, अब वो डिप्लेशन की वजह से क्या हो गए हैं, एक अलार्मिंग कंडीशन में चले गए हैं. सो समथिंग इज देयर विच कैन रिप्लेस द कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज. सो व्हाट इज टू मीट द इंक्रीज डिमांड फॉर एनर्जी, the non-conventional sources of energy are gaining importance. यानी कि एनर्जी की डिमांड तो होती जा रही है ना, as according the population is growing, the energy demand is also growing. So what we have to do? So we should replace the conventional resources to the non-conventional. So what we have to do? We have to use the non-conventional resources. Getting? So what we have to do? Solar energy, wind energy, geothermal energy, tidal energy, biogas, nuclear power. There are many types of non-conventional resources which we can use instead of the conventional sources. Getting? इन सबको हम conventional sources की जगह पे use कर सकते हैं. Okay, so these are some types of the non-conventional sources. Okay, so let's see one by one how the non-conventional sources are working. So first we will see, that is solar energy. The sun is the ultimate source of energy to all living things over the earth's surface. Solar energy can be directly converted into electricity by solar cell. यानी कि जो आपकी सोलर एनर्जी है हम उसे डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. These cells are also joined into solar panels to generate power for heating and lighting purpose. Solar panels are most important and efficient when placed on the roof in sunny, cloudless areas. Tropical countries like India have vast potential to hammer solar energy as these countries are blessed with abundant sunshine. It is inexhaustible and non-polluted, but it is expensive also. In India, the largest solar plant is located at Mithapur near Bhuj, or we can say Gujarat. Next is wind energy. Wind power has been used since ancient time to grind and pump water. Now it has become important once again due to the shortage of fossil fuels. The high cost of petroleum and also because of the pollution caused by fossil fuels, wind energy is generated with the help of a windmill. The high-speed wind rotates the windmill, which is connected to a generator to produce electricity. Denmark has 40% of its electricity produced from wind. The other leading countries are the US, Germany, China, and Canada. In India, wind power accounts for 5.8% of the total installed power capacity of the country. Tamil Nadu has the largest numbers of windmills.
Next non-conventional resource is nuclear power. Nuclear technology uses the energy released by the splitting of atoms. It means fission of certain element such as uranium and plutonium in a reactor. बच्चों ऐसे बहुत सारे रिएक्टर्स हैं जहाँ पे न्यूक्लियर पावर बनाया जाता है जो कि फिजन की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू बनता है. It is a low cost and low emission energy and alternative to fossil fuel. क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होता है तो ये फॉसिल फ्यूल्स का एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है. There are more than 440 nuclear power plants across the world that account for 17% of the world's electricity in 30 countries. In France, 78% of electricity is generated by nuclear power. In India, Rajasthan and Jharkhand have large deposits of uranium and thorium. The nuclear power stations in India are located in Kalpakam in Tamil Nadu, Tarapur in Maharashtra, Rana Pratap Sagar near Kota in Rajasthan, Narora in Uttar Pradesh and Kaiga in Karnataka. Here is one more non-conventional energy resource which is geothermal energy. So what is geothermal energy? The heat stored in interiors of earth is called geothermal energy. स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता होगा कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो इंसोलेशन की प्रोसेस के थ्रू जो एनर्जी होती है उसको ऑब्टेन करता है. तो वो एनर्जी जो अर्थ के सरफेस में इंटीरियर में इकट्ठा रहती है दैट इज़ नोन एज द जियोथर्मल एनर्जी. India has many small hot springs that can be used effectively to tap geothermal power. The energy from the hot springs at Paga Valley in Ladakh is supplied to local inhabitants and military establishment. The energy from the hot springs at Manikarna in Himachal Pradesh is being utilized for fruit preservation and refrigeration of perishable food item. Now let's see what is tidal power. Alternate rise and fall of sea water twice a day is known as tide. यानी कि पानी जो समुद्र का होता है वो उसका बार बार ऊपर को चढ़ना और उतरना that is known as tides. These tides can be used for generating electricity. A turbine is fixed in the coastal areas and it rotates with the ascending or descending of the water, hence thereby producing electricity. यहाँ पर जो है वो टर्बाइन फिट करी रहती हैं. जैसे जैसे पानी का अप एंड डाउन होता है वैसे वैसे ये मूव करती हैं और इनके मूव करने से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है दैट इज़ नोन एज tidal power. Russia, France and the Gulf of Kutch in India are important places to produce tidal energy. It is pollution free and inexhaustible. It has some drawbacks also as it destroys wildlife habitat and is difficult to harness. One more energy resource is there, students, that is known as biogas. The organic waste such as dead plants and animal material, animal dung and kitchen waste can be converted into a gaseous fuel called biogases. It is a mixture of methane and carbon dioxide. ये जो बायोगैस होता है ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दो गैसेस होती हैं इनका मिक्सचर होता है. इट इज़ एन एक्सेलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग and produce huge amount of organic manure
ईच ईयर, यानी कि ये बहुत अच्छा आपका सोर्स हो सकता है। जो भी आपका किचन वेस्टेज होता है, काउ डंग होता है, या फिर डेड एनिमल एंड प्लांट्स होते हैं, उनको हम एक प्रोसेस के थ्रू बायोगैस में चेंज कर सकते हैं। तो उससे जो हमारा एनवायरनमेंट है हम उससे भी क्लीन कर सकते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो फॉर सेविंग द means energy, other resources which are the exhaustible resources, we can save with the help of biogas. Okay, so students, these are energy resources, but we have to conserve the energy. But how we can conserve? So conservation of energy is very much needed in today's world, as our economy depends upon the easy availability of energy. But it is difficult to harness energy as it costs a lot. Saving of energy is very much needed in the country like India, which is a least efficient energy country. We should use few energy resources in a very careful and judicious manner, as energy saved is energy generated. Okay, so here are few measures which can be adopted to conserve energy resources. So number one, the efficiency of power station should be increased. Number two, waste from industries and power stations should be used in direct heating. 3. Waste should be burned to generate power. And one more is there, that is alternative source of energy should be used, such as gobar gas and biogas. So students, these are some manners through which we can conserve the energy resources. So you can also search few more ideas through which we can conserve the energy. So students, here your chapter, the mineral and power resources, is complete. Hope you understood this. So students, for more videos and updates, keep watching SST June.